हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ाई.com। और आज हम स्टडी करेंगे द एनिमल हस्बेंड्री का वीडियो नंबर 7, जिसमें हम डिसीजेस इन कैटल पढ़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो एंड तक जरूर देखना। सो So we will talk about the different diseases of cattle caused by the different organisms. Like the first one is the bacterial diseases, and then we will study about the viral diseases too, and the metabolic diseases, and the rest remaining diseases also we will cover in this video. So let's just begin with the bacterial diseases, and the first disease here is anthrax. ठीक है, सो सबसे पहले हम एंथ्रेक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बैसिलस एंथ्रेसिस करता है। इसको हम स्प्लेनिक फीवर भी बोलते हैं। सो ये टर्म आपको याद रखनी है, दैट इट इज कॉल्ड एज स्प्लेनिक फीवर। और इसमें होता क्या है, यू कैन लुक एट पिक्चर दैट देयर इज सम फोम from the mouth. Foamy blood from the nose and mouth is expelled, and the sudden death results. Okay, सो ये ऐसा कुछ होता है। और ये ज़्यादातर इन्फेक्शन क्यों होती है, बिकॉज जो जानवर होता है, जो कैटल होती है, दैट हैज़ ईटन द infected pasture or water or feed or something that is infected with this virus, sorry, bacteria. So this is there are sudden onset of the symptoms, and there is death. So what is the treatment? Bacterial treatment, you already know, that's penicillin, streptomycin and oxytetracycline. So this is anthrax disease. ठीक है, so इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। So now we will talk about the black quarter, that is the second bacterial disease, and it is caused by Clostridium shavoi, and it occurs in the young cattle between 6 months to 2 years. उनमें ज़्यादा होती है, and the puffy muscles are formed in the legs. The black leg जो होती है, that it has the infection that is mainly seen at the leg muscle. As you can see in the picture also, I have depicted it very well, that there is a swelling in the back leg. So treatment is of penicillin, obviously, because it's a bacterial disease, and this is a second bacterial disease. We have already done anthrax. Okay, so this is the second. So the third disease, we will talk about the hemorrhagic septicemia. So this is caused by पेस्चुरेला मल्टीकोइडा, एंड इसमें हाई फीवर हो जाता है। और ये तो चलो कॉमन सिम्टम है। जो मेन बात करती हैं, दैट देयर इज अ नेजल डिस्चार्ज दैट मे बी ब्लड स्टेन्ड एंड पुरुलेंट, दैट मीन्स इट कंटेन्स द पस। ठीक है, सो इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसकी पिक्चर मुझे अच्छे से मिल नहीं पाई है, बट यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स. And also animal produces some grunting noise in this disease, and also there is difficulty in breathing, and there is sudden drop in the milk yield, and also there is a swelling at the throat and neck. These are the symptoms of this disease. Okay, so now talking about the brucellosis, and it is also known as Banks disease also, and it is also it is caused by the Brucella abortus. और इसमें जो क्या होता है कि जब 5 months का जो fetus होता है, उसका abortion हो जाता है और placenta रह जाता है सिर्फ। So ये बहुत ख़राब disease है। So basically जो इसका जो test होता है, that is a milk ring test is done to check if this disease is present in the milk, or it is abortus bang ring test, ABRT. You need to remember the short form. So इसमें क्या होता है, that एक जो ब्रुसेला होता है मिल्क में, हम क्या करते हैं, ब्रुसेला एंटीजन डाल देते हैं इन मिल्क टेस्ट ट्यूब में, और उसको हम इंक्यूबेट करते हैं एट 70 डिग्री वाटर बाथ फॉर 40 to 50 minutes. So अगर if you can see here in the picture, जो बीच वाला, you can see there is a blue line. So if blue ring at the top, then it is a positive, that means that milk contains the brucellus bacteria. And if there is no ring, that means the milk remains uniformly blue, then there is a negative. So it means the test is negative for that, and there is no brucellus जो बैक्टीरिया है, ब्रुसेला अबोर्टस, वो प्रेजेंट नहीं है। सो इससे आपको पता चल जाएगा। ओके, सो दिस टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड इन हियर फॉर एग्जामिनेशन, सो रिमेंबर इट प्रॉपरली. ओके गाइस, so now we will talk about the last three bacterial diseases. So first one is the calf scours, and it is caused by Escherichia coli, and there is
होता क्या है इसमें, that you can just look here that in the picture कि that calf जो है that shows the prostration मतलब वो लेट जाता है ज़मीन पे, ठीक है, एंड ज़्यादातर उसी स्टेट में पड़ा रहता है, दैट देयर इज़ अ मार्क्ड प्रोस्ट्रेशन दैट यू कैन सी विजिबल सी कि वो सारा दिन ऐसे लेटा ही रहता है, पड़ा ही रहता है, वो हिलता जुलता कम है. So that is the main thing in calf scours, and also there is a profuse diarrhea, and in acute cases the blood poisoning जिसको हम septicemia बोलते हैं that occurs. Okay, so this is what is calf scours के symptoms और क्या होता है, ठीक है. अब क्यों होता है, there are some factor responsible. suppose उसको colostrum जो है वो नहीं मिला है, ठीक है, तो उसमें also there is vitamin A deficiency in that काफ, सो इस वजह से होता है. एंड ऑल्सो अगर हमने ज़्यादा हाई फैट प्रोटीन परसेंट मिल्क जो है उसको पिला दिया है, that also causes this thing. So this is bacterial disease caused by E. coli, ठीक है. So next we will talk about the tuberculosis. The tuberculosis that infects the lung tissue. Whereas अगर आप पैराट्यूबरक्लोसिस जिसको हम जोन्स डिसीज भी बोलते हैं और ये एफो में आने के चांसेस हैं, that is caused by the that is पैराट्यूबरक्लोसिस होती है, इसको हम पैराट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं. वो एक इंटेस्टाइन की इन्फेक्शन है जो कि फीसिस वगैरह से होती है और मेनली वो ऑरली जो है वो ट्रांसमिट होती है, और ये जो होती है ज़्यादातर वो एयर से जो है वो ट्रांसमिट होती है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस. तो ये चीज़ों इन दोनों में आपको डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए. फाइन, सो अच्छे से ये डिफरेंस याद कर लो, ठीक है. ऑल्सो इट इज़ अ डिसीज ऑफ इंटेस्टाइन एंड लिम्फेटिक टिश्यू. सो ये करता कौन है, दैट इज माइकोबैक्टीरियम बॉबिस. Dry cough is there, then followed by the wet cough. These are the symptoms, and this is a great loss in the weight, and the animal gradually becomes weak, and there is a long lasting diarrhea. That is an important point, that there is a long lasting diarrhea. Okay, so this was all about the bacterial diseases. Now we'll start about the viral diseases. Okay, let's just move. So now we will talk about the viral diseases, and the viral diseases में सबसे पहले आती है the rinderpest disease, this is called as the cattle plague as well. So ये चीज़ आपको याद रखनी है कि cattle plague किसको बोलते हैं, and it is a mucosal disease. mucous membrane जो होती है उसको ज़्यादा इन्फेक्ट करती है, और ये वायरस करता है, मोरबिली वायरस जो है इसको कॉज करता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट कि कैसे होती है. देयर आर 4 स्टेप्स. फर्स्टली तो बॉडी टेम्परेचर राइज होगा, फीवर होगा, उसके बाद यहाँ पे आप लिप्स एंड गम टंग के अराउंड एक पिन हेड वेसिकल्स देखेंगे, एंड आपको रेड एरिया दिखेंगे. फिर शूटिंग एकदम से डायरिया हो जाएगा, फिर डायरिया धीरे धीरे स्टॉप होने लगेगा और टेम्परेचर फॉल करेगा बिलो नॉर्मल, एंड एनिमल डाइज. ओके, सॉरी गाइज ये पिक्चर ऊपर लग गई, ठीक है. सो वैक्सीन इसमें 2 वैक्सीन यूज़ करते हैं, ये आपको अच्छे से याद कर लेनी है बिकॉज वैक्सीन they can ask in exam. Tissue culture rinderpest vaccine, TCRV, and goat tissue virus rinderpest vaccine जिसको GTV बोलते हैं, ये दोनों वैक्सीन यूज़ होती हैं in rinderpest disease, ठीक है. So remember it very properly guys. So now we will talk about the second number वाली viral disease, that is foot and mouth disease, जो कि FMD virus जो है वो करता है, foot and mouth disease virus करता है. And there is formation of vesicles, that is fluid filled blisters, and there is fever, that is dullness, and anorexia, that means the appetite disorder, and there is drastic drop in the milk production, and there is blister formation in the mouth and tongue, and vaccination after vac is the right here, ठीक है. So now we will talk about the metabolic diseases, और सबसे पहले आती है ब्लॉटिंग एक्सेसिव लेगुमिनस फॉडर अगर हम दे देते हैं कैटल्स को तो वो हो जाता है, तो जिससे गैस एंड फॉर्म इन द ह्यूमन बन जाता है. So next we will talk about the mastitis, जो कि inflammation of the mammary glands, and this is normal thing that you need to remember. Then is a milk fever मतलब hypocalcemia, मतलब कैल्शियम की कमी और मैग्नीशियम की कमी को ब्लड लेवल में हो जाती है जिसको बोलते हैं. तो ज़्यादातर जो होती है ये 72 आवर्स ऑफ कार्विंग के बाद होती है. सिम्टम्स इज लाइक देयर इज लॉस ऑफ एपिटाइट, कॉन्स्टिपेशन एंड रेस्टलेसनेस. ओके, सो
So now we will talk about the protozoal diseases in the cattle. So first of all, we will talk about the coccidiosis that affects this. That is a protozoal disease that affects the fine lining of the small intestine, and there is a, you can see the symptoms like anemia. There is a their failure to thrive, and there is a rough hair coat. And symptoms are not important, but you need to remember that this is a protozoal disease. That is the main important point, and also it affects the small intestine lining. Then is theileriosis, and that is a tick-borne protozoan disease. This is also tick-borne protozoal disease, and anaplasmosis is also a tick-borne. This is also a tick-borne. Okay, so ticks क्या करती हैं that and they actually affect the lymph nodes of the cattle. ठीक है, so ये चीज़ आपको याद रखनी है. Then the anaplasmosis, इसमें भी ये symptoms आते हैं. There is fever, there is anemia, there is breathlessness, there is abortion and death. And basically the RBCs of the cattle, they are infected in anaplasmosis, and it is also known as the gall sickness. ठीक है, so ये चीज़ आपको जो है अच्छे से याद रखनी है, इनके नाम अच्छे से याद रखनी है. Okay. So now let's just talk about the zoonotic diseases. तो ये AFO में already आ चुका है. So mark it very important. तो उन्होंने just definition ही पूछी थी, तो आपको पता होना चाहिए that what is zoonotic diseases. The diseases that can spread from animal to human, that is a zoonotic disease. For example, very important example is anthrax. So आपको anthrax तो अच्छे से याद रखना है. Tuberculosis, brucellosis and rabies, ये इसके examples हैं. सो गाइस, हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है रिलेटेड टू कैटल. और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे पोल्ट्री में जितनी भी डिसीजेज होती हैं, और जो भी बाकी डिसीजेज बची हैं वो एक वीडियो में हम पार्ट 2 में कवर कर देंगे. और ये हमारा ये ख़त्म हो चुका है. सो थैंक यू, बाय बाय फॉर नाउ. और अगर आपको अच्छा लगा कंटेंट तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करना. ठीक है, आप ये हमें मोटिवेट करता है बहुत अच्छा कंटेंट बनाने के लिए. सो थैंक यू, बाय फॉर नाउ.